बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़गार गाइड में खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में हम ईटा टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आईटी एंड बेसिक कंप्यूटर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और ये पार्ट 2 है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 2, ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस विंडोज़। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following is an example of system software rather than application software? इसमें ऑप्शन सी आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। क्वेश्चन नंबर 22, what is the primary purpose of an operating system? इसमें ऑप्शन सी आता है to manage hardware resource and act as a user interface. Question number 23, in Microsoft Windows, what is the default keyboard shortcut to permanently delete as selected file without sending it to the recycle bin? इसमें ऑप्शन सी आता है शिफ्ट प्लस डिलीट। इस तरह एमसीक्यूज 5-6 एमसीक्यूज लाजमी हर टेस्ट में आते हैं, तो इस तरह एमसीक्यूज पर लाजमी फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 24, which default Windows utility allows a technician to view and manage active processes, application memory consumption and end unresponsive programs? इसमें ऑप्शन बी आता है टास्क मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 25, what is the name of the main graphical workspace interface that appears immediately after booting up a Windows computer? इसमें ऑप्शन सी आता है डेस्कटॉप। क्वेश्चन नंबर 26, which Windows keyboard shortcut is used to instantly close the active application window? इसमें ऑप्शन बी आता है ALT plus F4। क्वेश्चन नंबर 27, what file extension is universally used for executable application setup files in Windows? इसमें ऑप्शन सी आता है EXE। क्वेश्चन नंबर 28, in Windows File Explorer, which shortcut selects all items, file or text inside the active folder or Windows? इसमें ऑप्शन ए आता है कंट्रोल प्लस ए। क्वेश्चन नंबर 29, what is the purpose of the Windows recycle bin? इसमें ऑप्शन बी आता है to temporarily store delete files, allowing for easy restoration. Question number 30, which utility should a technician open to safely uninstall software programs, adjust system time, or configure user accounts in older Windows environments? इसमें ऑप्शन सी आता है कंट्रोल पैनल। क्वेश्चन नंबर 31, pressing the Windows logo key plus D combination on the keyboard performs which actions? इसमें ऑप्शन सी आता है minimize all open windows and displays the desktop. Question number 32, what type of user interface relies heavily on visual icons, windows, menus, and mouse pointers rather than typed text commands? इसमें ऑप्शन बी आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। Question number 33, which shortcuts allows a user to rapidly switch between multiple open windows or application in Windows? इसमें ऑप्शन बी आता है ALT plus T tab। Question number 34, what is the core central components of an operating system that remains in memory and directly controls hardware access and software execution tasks? इसमें ऑप्शन सी आता है कर्नल। Question number 35, which tools help free up storage space by locating and erasing temporary files, systems, logs, and empty cache directories? इसमें ऑप्शन ए आता है डिस्क क्लीनअप। क्वेश्चन नंबर 36, in Windows,
A small graphic icon representing a direct link to a file, folder or program located elsewhere on the storage drive is called a shortcut. इसमें ऑप्शन बी आता है. Question number 37. Which programs is the default file management application used to browse, move, copy and organize folder in Windows? इसमें ऑप्शन बी आता है फाइल एक्सप्लोरर. Question number 33. What is the quick keyboard shortcut to rename a selected file or folder in Windows? इसमें ऑप्शन बी आता है F2. Question number 39. What type of software program translates specific operating system commands into instructions that a particular piece of physical hardware like a new printer can be understand? इसमें ऑप्शन बी आता है device driver. Question number 40. Which Windows key combination lock screen your computer instantly when leaving your desk? इसमें ऑप्शन सी आता है विंडोज़ की प्लस एल. मज़ीद टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यूज़ और मटेरियल के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की पार्ट 3 देखने के लिए नीचे कमेंट्स. टॉप 100 बेसिक कंप्यूटर एंड आईटी के जो एमसीक्यूज़ है ये 5 पार्ट में हम पर मुश्तमिल है और ये हर वीडियो 20-20 एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल है और ये मुकम्मल सिलेबस के मुताबिक हैं. ये तमाम एमसीक्यूज़ पहले तमाम टेस्टों में रिपीटेडली आ चुके हैं.